Hello everyone, welcome back to my channel. I'm back with another video. 2022 is almost over and we are going to enter into the new year 2023 very soon, and with all the new energy, and we want to make plans for the new year, take resolutions या अपनी bucket list finalize करते हैं. I have also made a list for myself जो चीज़ें मैं 2023 में करने का plan कर रही हूँ, और maybe some goals or things that I want to achieve in the next year. तो मैंने सब कुछ जो भी मैं plan कर रही हूँ करने का मैंने इस डायरी पे नोट किया है, and I'll tell you all about it. Just like the title of this video, here are the 23 things that I plan to do in 2023. So let's begin with the number one thing that I want to achieve is to be fitter or be healthier. So अभी तक जितने भी like from the past few years, what I always thought कि मैं इतना weight lose करूँगी या I used to keep my goals like कि जो weight या health से related goals होते थे, I used to keep it like मुझे 10 kgs lose करना है, और इस तरह के goals रखती थी मैं. तो वो कभी भी लाइक मुझे रियलिस्टिक और अचीवेबल से नहीं लगते थे, बट आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी सिंपल. सो इट इज़ to be healthier and be fitter. I will not be focusing much on numbers कि कितना weight lose हुआ या कितना weight gain हुआ. I'll just focus on being healthier, make healthier choices and be my strongest self. Second thing that I want to do this year is to wake up early. I नो इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग्स जो बहुत सारे लोगों को लगती है, मुझे भी लगती है. मेरा हमेशा से बचपन से ही रूटीन ऐसा रहा है. जब मैं पढ़ती भी थी तो मैं हमेशा रात को पढ़ती थी, लेट नाइट, सो कभी सुबह जल्दी नहीं उठती थी. बट ओवर द टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जब भी मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई रियली इन्जॉय द टाइम, और वो जो पीसफुल सा टाइम होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड आई लव द एनर्जी दैट आई हैव व्हेन आई get up early in the morning. So I want to build this habit of waking up early in the morning. Next thing that I want to do in 2023 is to read 6 books at least. बहुत सारे लोग हैं जो पूरे साल में like 24-25 बुक्स भी पढ़ते हैं. 2 months में मुझे एक बुक कंप्लीट करनी है, so at least पूरे साल में मेरी 6 बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, and I'll be really happy. There are tons of books in the market that you can learn so many things from. So I also want to do that and just complete 6 books in the next year. The next thing on my list is to travel or explore 2 different places that I haven't been to before. So traveling मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, but फिर भी for some reason or the other, because I stay in चंडीगढ़ and मेरा होम टाउन हिमाचल में है और मेरा हेड ऑफिस अमृतसर में है. सो मैं इन 3 जगहों में पूरे साल में एटलीस्ट 3-4 बार जाती रहती हूँ, तो इतनी ट्रैवलिंग वैसे ही हो जाती है, तो मैं और जगहों पे ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. बट आई विल स्टिल मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 2 नई जगह पे जाऊँ, बिकॉज मुझे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, स्पेशली टू न्यू प्लेसेस. आई हैव बीन मीनिंग टू लर्न हाउ टू स्विम फॉर अ लॉन्ग टाइम. मुझे बीचेस पे जाना काफ़ी अच्छा लगता है, बट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू स्विम आई कांट रियली एन्जॉय it as much as I want to. So for that reason मैं मुझे स्विमिंग आती होगी तो आई विल बी एबल टू एन्जॉय गोइंग इनटू द पूल्स, और जब आप बीचेस पे जाते हो कभी तो वहाँ पे आप थोड़ी सी स्विमिंग भी कर सकते हो. सो जस्ट फॉर दैट आई रियली वांट टू लर्न हाउ टू स्विम. नेक्स्ट थिंग ऑन माई लिस्ट इज टू लर्न अ न्यू डांस फॉर्म. आई लव डांसिंग. मैं जब छोटी सी थी, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 2nd स्टैंडर्ड, मैंने पहली बार डांस परफॉर्म किया था इन माई स्कूल. इन माई कॉलेज ऑल्सो आई परफॉर्म 2 times, एंड इन माई वर्क ऑल्सो वेन एवर आई गेट द चांस मैं डांस ज़रूर परफॉर्म करती हूँ. बट ऐसी कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म नहीं है जो मुझे अच्छे से आती हो. I want to learn one particular dance form. There is one dance form in my mind which I want to learn. Let's see. Dance सिखाने वाले मुझे कोई अच्छा सा coach मिल जाए, and I will learn that this year. Next thing on my list to do is to reduce my screen time. There are times when I just scroll and start watching reels on Instagram and just scroll and scroll and scroll, and it takes hours and hours, and आपको पता भी नहीं चलता कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया है और आप बस रील्स ही देखे जा रहे हो. बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका स्क्रीन टाइम बहुत इंक्रीज हो जाता है. जस्ट लाइक व्हेन यू गो गेट फ्री फ्रॉम योर ऑफिस, यू फील लाइक ठीक है नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज बिंज वॉच कर लेते हो, और या फिर आप अपनी बस रील्स स्क्रोल करने लग जाते हो और यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रोल करने लग जाते हो, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए. सो दैट इज समथिंग दैट आई वॉन्ट टू कट ऑफ अ लिटिल बिट. सो इट्स वन थिंग ऑन माई लिस्ट.
Next thing on my list is to sort out my digital clutter, which can be a lot of photos that I have, or videos, or documents, everything that I have on my phone or on my hard drive or on my laptop. I want to sort everything out in folders, upload all the important documents on a drive so that whenever I need it, it is easily accessible for me. And also there are so many pictures that we click and so many videos that we take जो हम बस ऐसे randomly ले देते हैं, कभी पोस्ट भी नहीं करते, वो आपके फ़ोन में पड़ी रहती हैं या कभी आप अपने लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर देते हो तो वहाँ पड़ी रहती है. I want to sort all of these out, and हर चीज़ जो कि मुझे पता हो, if I actually want to relive those moments and see those pictures, मुझे actually पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ पे हैं. Next thing that I want to do is I want to start meditation. Meditation is one thing which I know for sure has so many benefits to everyone, but for some reason I was never able to get into meditation. But now I feel is a high time to get into it, because जैसा हम सबका lifestyle है, there are so many things continuously. आपके mind कुछ ना कुछ चीज़ से occupied रहता है, आपका हमेशा ही कुछ ना कुछ mental chaos चलता रहता है. So I feel that mind also needs some rest. I want to have more focus in things that I do in life. So उसके लिए I want to start my journey of meditation. Next up, I want to start journaling back again. Yes, I used to journal when I was a child. I used to write about what I did in the day and how I felt in the day, and मुझे काफ़ी अच्छा लगता था. I used to maintain those diaries. In fact, till my first year of graduation, I used to write diaries. Not like every day मैं लिखती थी, but जब भी मेरा मन करता था, whenever I used to feel happy or sad, और जो भी कभी कोई overwhelming emotion होता था specifically, I used to write about that. Right now, the kind of journaling I want to start is a bit different. I don't want to write about every day, how I'm feeling and what all happened in the day, but what I want to also write about is my food. So I want to keep a food journal separately. I want to keep a workout journal separately. I really feel that that is going to help me in so many ways. Next up is a very very basic thing. Everybody knows that आपको ये करना चाहिए, but फिर भी हम लोग ये चीज़ completely अच्छे से करने में लैक कर जाते हैं. I feel बहुत सारे लोग करते होंगे. I do it. Is to drink more water. Like I never have the track of how much of water I have consumed in a day, but I always almost feel like it is not enough. So I want to keep a track in some way or the other. किसी तरह से I'll put reminders on my phone or something to drink water or any way possible, but I'll make sure that I drink more water. Next thing on my list is start listening to podcasts rather than watching series or any movies. One thing I know about me for sure is that जब भी मैं किसी चीज़ को सुनती हूँ तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा देर तक याद रहता है. अगर मैंने कोई जैसे ऑडियो बुक या कोई सॉन्ग सुना है, सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु रिमेंबर ऑल द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स, एंड जब आप उनके सामने कोई गलत लिरिक्स गाते हो तो उनको बुरा लगता है. सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल. तो मुझे जो भी मैंने सुना होता है मुझे बहुत ईजिली याद रहता है. सो आई फील दैट इफ़ आई वेन एवर आई एम डूइंग माई होम चोर्स और मे बी इफ़ I'm going out for a walk or something, so मैं podcast सुनना start कर सकती हूँ. I still need to figure out कि कौन से podcasts हैं, what sort of podcast do I want to listen to, but I want to start listening to podcasts because I know my auditory skills are good, and इससे मुझे अच्छी तरह से मेरे माइंड में रजिस्टर होता है whatever I listen to, and मुझे याद भी रहता है. So I want to start doing that. The next thing is so important in today's time. I cannot stress enough on this one, is to prioritize my mental health. So जो हमें बाहर दिखता है, like if you are feeling unwell और if आपको फीवर हो गया है या आपको खांसी हो गई है या आपको जुकाम हो गया है, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं और हम उसका इलाज करने लग जाते हैं, या आई भी फील कि हाँ ऐसा हो रहा है. बट हम मेंटल क्योर्स को कभी भी इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, ऑल्दो अब बहुत सारे लोग देने लग गए हैं इसे इम्पोर्टेंस जितनी देनी चाहिए. बट आई स्टिल फील दैट ये कहीं ना कहीं इग्नोर हो जाती है, which I don't want to do. Most of the times I am alone. There are so many scenarios that go into my mind and I just keep thinking about something or the other, and कई बार वो बहुत ज़्यादा chaotic हो जाता है. So I don't want to keep the chaos in my mind,
and I don't want to let anything hamper in my life because of that chaos. So I want to put my mental health as a priority, and for that, even if I'll feel that I need some help from a therapist or a psychologist, I won't mind taking that. I will just go forward and seek for help if I'm feeling down sometime, or if I'm not feeling all right in terms of my mental space. I will make sure that I speak to someone about it. Next on my list is invest more. So to be honest, I haven't really done a lot of investments until now. It's been more than 7 years that I started working. I highly feel that I should start investing a little bit more. I should plan my investments and plan my financials in a way that I do a little bit more investments so that my future is more secure. Next I want to do is start praying more. I grew up in a religious family. I believe in a higher power, and I believe that prayers have power. So I want to start praying more often because I believe in energies. I believe in things like what you say can turn out to be beneficial. Just the act of prayer, I feel, brings so much of positivity in you, and that is why I want to make sure that I do it more often. Next up, I want to start taking my affirmations more seriously and take it to another level. So I really believe in affirmations and law of attractions, manifestation, things like that. So what I have been doing the past 1 year, or maybe like every now and again, I don't do it every day, but I like to listen to positive affirmations. What I've just done is just जो online होती हैं वो videos ही मैंने सुनी हैं, and that is somebody else just saying these affirmations for you. मैं चाहती हूँ कि मैं वो affirmations लिखना भी start करूँ and खुद से बोलना भी start करूँ, so that I feel that energy even more. Next thing in my list is to make a vitamin, mineral or supplements schedule. As far as I understand, I feel कि जितना भी जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स नहीं मिल पाते, स्पेशली जस्ट लाइक विटामिन डी की डेफिशिएंसी आई फील मोस्टली सबको होती है आज के टाइम पे. सो आई नो, लाइक आई हैव गॉटन माई ब्लड टेस्ट डन कपल ऑफ टाइम्स, और उसमें जो भी डेफिशिएंसीज आई हैं मैंने वो सप्लीमेंट्स स्टार्ट किए हैं, वो विटामिन्स मिनरल्स जो भी रिक्वायर्ड थे वो स्टार्ट किए हैं, बट देन आई एम नेवर रेगुलर विद देम. सो आई वांट टू सेट अप अ रूटीन फॉर दैट, सो दैट वो मैं मिस ना करूं और जो भी डेफिशिएंसीज हैं वो अच्छे से फुलफिल हो जाएं. Next thing is that I want to take my family on a trip, especially if that can be an air travel. I have my mother, my younger sister and my younger brother in my family. और उनमें से कभी भी किसी ने air travel नहीं किया है. My younger brother is just 10 years old, so उसको I really want to see that excitement in his eyes. And वो कुछ भी नई चीज़ें करता है तो वो बहुत ज़्यादा excited होता है. So I really want to take them on a trip this year. Next up on my list is to do at least 2 professional courses. As some of you might not know, I am also working as a human resource professional, and I also want to upskill in terms of my profession. So in human resources, whatever best courses I can find, I want to do at least 2 of them so that I can deliver a little bit more, contribute a little bit more, and I also will feel more confident in terms of my work. Next on my list is something very different, and some of you might find it strange, but I want to get my past life regression done. That is just a random thing that I've been wanting to do for few years, and कई बार मैं बहुत ज़्यादा close पहुँच जाती हूँ उस जगह के जहाँ पे like I speak to someone and somebody says that I know somebody who does this and you can go there and just let me know if you want me to get you connected to that person, but then I don't know for what reason I don't do it, but this year for sure I'm going to get it done and just put it out of the way. And if you don't know what past life regression is, so it is like sort of an hypnosis thing in which you remember your past lives. Okay, so वो एक trained professionals होते हैं जो ये करते हैं, वो आपको बिठा के hypnotize करते हैं और आपको अपना past life याद आ जाता है, जो कि पिछले जन्म जिनको कह सकते हो आप. I know बहुत सारे लोग believe नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ होता है. I'm not saying कि believe करो या ना करो, unless जब तक मैं खुद नहीं करवा लेती तब तक मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दूंगी, but that is one thing that is there in my mind कि मुझे ये कराना है, तो अगर मैं करवाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सच है या नहीं है.
Next on my list is give more back to the society. So I feel कि जितना भी मुझे life में मिला है, I feel myself as privileged. I have a good job. I have my family who's with me. There are so many things in my life that I'm really grateful for, and I feel that there are so many people जिनको बहुत सारी चीज़ें उनमें से नहीं मिल पाती. So I want to give something back to the people who don't have access to a lot of things like education or good food or a nice home. So I will try to do my bit जो भी मैं कर सकूँ. Next up is something that I'm guilty of. I love shopping. I know most of the girls really love shopping, और कई boys को भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, but मुझे shopping करना बहुत पसंद है, especially clothes, shoes, jewelry and all that. But I feel that I have enough clothes, और इतने ज़्यादा मुझे ज़रूरत भी नहीं है इतने सारे कपड़ों की, और बहुत सारे कपड़े बस वैसे ही पड़े रहते हैं जो मैंने पहने भी नहीं होते. So I just want to make sure that I spend little less on material things जो कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके साथ भी नहीं रहने वाली हैं. And clothes are clothes only, right? And I already have so much. ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ये कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी शॉपिंग नहीं करूँगी, but I will reduce it and I will try my best to not do it as much as I do. So the last thing that I want to do in 2023 is to connect more with my friends and my family. So for this thing I want to apologize to all of my friends जिनको मैं बहुत ज़्यादा time नहीं दे पाई हूँ in the past few years. Life is unpredictable, life is short as they say. So I really feel that I want to connect more with all of my friends जो मेरे साथ में इतने सालों से रहे हैं. To all of my friends out there, I'm going to connect with you very soon. Also, like in terms of my family, I have a very big family, extended family है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, and there are so many people, my cousins जिनके साथ बचपन में हमने बहुत ज़्यादा अच्छा time spend किया था. So I want to connect with them as well, and yeah, with my family in general, like my mom, my sister and my brother, I want to spend more time with them. And these are all the 23 things that I want to do in 2023. I would love for you to share your things, or maybe your resolutions, or what plans do you have for the next year. And do leave a comment if you enjoyed watching this video. And I really hope next year brings so much of joy, happiness, success and love into your lives. Sending you lots of love and good wishes, and a very happy new year to all of you.